हेलो एंड वेलकम दिस वेरी स्पेशल प्री बजट इंटरेक्शन और मैं आ गई हूँ एक बहुत ही खास जगह. आई एम एट द बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी एंड आई हैव विथ मी ऑल द दिग्गज जितने भी बड़े हैं यहाँ पर. उनसे हम बातचीत करेंगे एंड वील ट्राई एंड फिगर आउट एज टू व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस बजट बिकॉज वी नो इट्स अ फुल बजट. मतलब नई सरकार बनने के बाद हम देख रहे हैं कि एक पहला फुल बजट आने वाला है और बहुत सारी डिमांड है. एक आम टैक्स पेयर की तो डिमांड है ही, लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्री क्या चाहती है, what are the corporates thinking about, and also Bombay CA Society has sent a proposal to the finance minister also. और ये proposal पर भी हम सवालात करेंगे, जानेंगे कि ये कैसे आपकी और हमारी ज़िंदगी आसान बनाना चाहते हैं. तो let me introduce all my guests today. I have with me Anand Bhatia, President, Zubeen Bilimvoria, Vice President, Kinjal Bhuta, Joint Secretary, Anil Sathe, Past President and Co-Chairman, Direct Tax Committee, and Divya Jokhakar, Managing Committee and Direct Tax Convener. Welcome all of you to this very special interaction today. And Anand, let me start with you because this is the proposal of, that I have, which the society has sent across. What are the highlights? What are the demands? It's a full budget, and we are expecting a lot, not only from personal tax point of view, but also corporate tax and other back-end issues that have been raised by the society and a lot of other tax experts. So, what is your take? So thank you Kavita for inviting us ये आपके शो पे. हर साल बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी एक प्री बजट मेमोरेंडम पब्लिश करती है एंड वी हैंड इट ओवर टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड उसमें काफ़ी सारे सजेशंस है, सुझाव है फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव और पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से भी. Okay. एंड आफ्टर द बजट हम पोस्ट बजट मेमोरेंडम भी एक पब्लिश करते हैं जिसमें क्या क्या सुझाव थे, उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो नए सुझाव आए हुए हैं उनमें हमारी क्या एक ओपिनियन है, एक क्या प्रक्रिया है. सो ये साल भी जो प्री बजट मेमोरेंडम है उसमें काफ़ी सारे सजेशंस हैं एंड वी हैव ऑल द पीपल हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन ड्राफ्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्री बजट मेमोरेंडम. तो ये हम आज डिस्कस करेंगे. जहां तक मैं समझता हूं ये एक फुल बजट है मोदी सरकार 3.0 का एंड अकाउंटिंग में बजट एक काफी रूटीन प्रोसेस होता है जहां पे फंड कहां से आने हैं उसकी एक चर्चा होती है और फंड कहां पे डिप्लॉय करने उसकी एक चर्चा होती है. Right. हमारा जो एक डायलॉग है काफी कुछ फंड कहां से आना चाहिए उस पर फोकस ज्यादा रहता है कि टैक्स कैसे कम करे, कहां से टैक्स ले, कहां से टैक्स ना ले. बट प्रिडोमिनेंट बजट का फोकस होना चाहिए कहां पे उसका डिप्लॉयमेंट होना है, क्या क्या पॉलिसी इंटरवेंशन होने चाहिए ताकि जो अपने को आउटपुट चाहिए इन द इकोनॉमी वो आए. एंड उसमें आई थिंक एक बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हमेशा ये रहा है दैट इंडिया हैज अ ह्यूमन कैपिटल विच इज समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रांग एंड उसको कैसे एम्पलीफाई किया जाए उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए इंटरवेंशन करनी चाहिए. लास्ट बजट में हमने देखा कि थोड़ी स्कीम्स आई थी फॉर जॉब क्रिएशन, अप्रेंटिसशिप एक्सेट्रा. हम चाहते हैं कि उस पे फोकस रहे इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन, जॉब ग्रोथ एंड एंटरप्राइजिंग. अगर वो हम करते हैं तो हमारे पास जो एक 1.3 बिलियन की आबादी है उसका हम एक प्रॉपर यूज कर पाएंगे और बाकी सब चीजें अपने आप ऑन ट्रैक आ जाएगी. एज फार एज द टैक्स प्रोविजंस आर कंसर्न्ड, we have Anil ji, Kinjal, Divya to help us deciphering those provisions. Right. Just taking a leaf from what he explained, Zubin, I want you to, I mean, he's highlighted a lot of demands that you have put up, but apart from that, talking about this proposal and talking about individual taxpayers' demand, what has been proposed and what's the impact so far that you're also witnessing? I think whatever has been proposed for the individual taxpayers, I would say it is in bits and pieces. There have been changes which are there, whether it is in the exemption rate, whether it is giving options, whether you follow the earlier regime or the new regime. To that extent, whether a person can avail of the deductions, whether going forward, whether there is clarity in terms of even capital gains tax also. Another area of focus which is there, considering that I am connected with the charitable sector also, charitable trusts also would maybe looking at some simplifications. There were some provisions which were introduced, whether all of them have really had the desired effect or not. Plus I think the middle class has always been hit from both the sides. They are the ones who are literally trapped because from the salary the tax is deducted
whether the amount of taxes which they are paying, whether they are really getting the corresponding amount of benefits. Benefits. That's Though, always of the question. course, to be very fair, the current government has been spending quite a lot on the infrastructure and also on a lot of other measures. Right. So there are definitely benefits, but there is still scope for maybe increasing the exemption limits and helping them to really meet the inflation. Dil mange more. Dil mange Dil more, mage exactly. more, Yeah. it is always there, yes. Yeah, So I yeah. think those are the general expectations which I would have from the middle class perspective, and also from the charitable trusts perspective also. Sure. There can be more clarity in some of the laws and the provisions. Sure. We'll go in detail on Yes, this yes. with Divya Yes. and Kinjal. But Yes. sir, to you, people are there in the old tax regime also now, and they have shifted. A lot of them have shifted to a new tax regime also. Chances of fading out old tax regime in this budget? What do you think? Maybe not in this budget, and expectations from the budget, इस पे सब लोग उम्मीद और आस लगाए बैठे रहते हैं. And apart from a game of cricket, this is the second most, I would say, most popular event. और हमारी टीम because of bad luck उन्होंने अपने देश के उम्मीदों पे पूरा पानी ही फेर दिया है. तो आप लोग उम्मीद रखे हैं फाइनेंस बिल या बजट से. And I believe that yes, going forward the old regime will be phased out. Okay. That will make law far more simpler. Sure. But as far as the tax rates and the raising the exemption limit is concerned, I think it's a balancing act. क्योंकि जैसे उनको खर्च भी करना है और आमदनी रखनी भी है. तो इस दोनों का बैलेंस रखते हुए I think yes, slabs would be calibrated and maybe the exemption limit raise होने की बहुत सारी उम्मीद. So न्यू टैक्स regime में तो किंजल हम हर बजट में कोई ना कोई बदलाव देख ही रहे हैं. कभी स्लैब्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, कभी सारे डिडक्शन मेरे ख्याल से उन्होंने इंक्लूड कर दिया है. इसको और कितना अट्रैक्टिव बनाना होगा अगर आप सच में ओल्ड टैक्स regime को फेड आउट करने के बारे में सोचें, बिकॉज पीपल आर स्टिल एज पर द ओल्ड टैक्स regime. मैं खुद हूँ ओल्ड टैक्स regime में. पीपल हैव होम लोन्स, दे हैव इंश्योरेंस पे जो आपको टैक्स छूट मिलती है. ये सब बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके लिए, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ डिसिप्लिन एज फार एज योर फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्न. आप उसको हटा देंगे तो आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम तो बहुत आ जाएगी, बट देन यू डोंट नो इफ दैट पर्सन इज रियली इन्वेस्टिंग एंड सेविंग मनी. दिस वॉज फोर्स्ड सेविंग, बट देन we are doing something, right? So what do you have to say? So see, old regime और new regime में जो सबसे बड़ा difference है, that is the investments which were made earlier, right. और जो deductions new regime में allowed नहीं है. So जो भी investments हम PPF में करते थे, provident fund में करते थे, NPS में करते हैं, NPS में कर रहे हैं, medical premium जो pay कर रहे हैं, term plan insurance जो pay कर रहे हैं, ये सारे deductions जो earlier old regime में available है, वो सारे for simplicity से एक new regime में से निकाल दिए गए. So that because they want to transition towards a taxation regime जहाँ पे बहुत simplified formation है, you have to give your income, slab rates है, apply that, basic standard deductions जो है earlier it was 50,000, in the last budget it was increased to 75,000, but gradually they are wanting people to apply the new regime. Right. So that can happen only by increasing the slab rates. Exactly. New regime में every year they have started increasing the slab rates. This year also it is expected that they may increase the slab limit. They might increase the slab limit up to rupees 10 lakhs. Okay. Also there is rebate under section 87A. So जो भी 7.5 lakhs से जिनकी income कम है उनको rebate available है. So that is a simplified version. Okay. So I think if they have to make people to opt for new regime, gradually they will have to increase the slab rates and minimize the difference in the taxation impact. Okay. So वो एक चीज़ वो बहुत ज़रूरी है करनी. दूसरा एक है for new regime is that though they want to discourage investments deduction which was earlier available, बहुत सारे deductions act में available थे, तो वो सारे weed out करने हैं. That is the reason to come to this regime. But one very important investment or important necessity in today's time is the medical premium which is being paid. Now वो medical premium पुराने regime में available है, but in the new regime unfortunately it doesn't find any place. So I think that is something which is more of a necessity rather than an investment. That is something which can be brought up to make it more attractive.
at the same time, people in a middle to higher middle class group have started investing in term insurance. The term insurance premiums are excluded from medical premium, so that can also be included to make it more lucrative. And I think बहुत कम difference रह जाएगा फिर तो old और name tax regime में अगर but आप see ऐसा- medical so investments जब भी PPF वगैरह है, NPS है, provident fund है, I'm not talking about that because वो निवेश है. So वो निवेश है. that people will do उनका because almost 2 to 2.5 lakhs of amount of deduction was that. But when it comes to medical premium, it is around 50 to 75,000, and that is something which, irrespective of the regime, should be available to taxpayers as such. So that is one I think legitimate expectation which a taxpayer could have. And I think another thing is standard deduction, which they have been increasing year to year. But again, as Zubeen bhai mentioned, that we have lot of salaried class, middle class taxpayers. Now, for them, there is no other expenditure available except for standard deduction. So I think somewhere or the other, over the period of time, if they can bring some gradated standard deduction based on your income, the higher you are earning, probably you may have certain higher expenses, and the standard deduction could increase to that point. That could also help people to just navigate to the new regime and stop using the old regime totally. Okay. So I think these basic amenities probably they may give, and that could weed out the old regime subsequently. Right.